Class 8 Science. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 17 Aldolescence. Question answer. Let us start. What will be your question? That is this chapter. So that chapter is 17 Aldolescence, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। चलिए देखते हैं पहले पार्ट में क्या दिया हुआ, लेसन में क्या कुछ गिवन है। सो चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 11 years to 19 years आर कॉल्ड एडोसेंट्स। मतलब ये किशोर बोले जाते हैं इनको। एडोसेंस मीन्स किशोर। तो ये किशोरावस्था होती है हमारी किस किस में, 11 से लेकर के 19 तक के बीच में। इसमें ऑर्गन डेवलप होते हैं सब। Adolescence or the onset of the puberty marks the beginning of reproductive life. The onset of puberty being about maturing of the reproductive organs. Hair grows at various places on the body. Breasts develop in girls and the facial hairs. Mustache and braid appears in boys, यानी मूछे दाढ़ी जो आने शुरू हो जाती है। Voice of boys becomes hoarse as voice box and lasts during the adolescence। मतलब इस समय बच्चों की आवाज बहुत मोटी रहती है, लड़कों की आवाज कुछ मोटी हो जाती है, लड़कियों की थोड़ी पतली रहती है आवाज। तो चिल्ड्रन गेन हाइट ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, और इस टाइम पे हाइट उनकी बढ़ती चली जाती है। The onset of puberty and the maturity of the reproductive parts are controlled by hormones, और ये हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होना चालू हो जाते हैं, reproductive hormones। तो हार्मोन्स are secrets of endocrine glands and which are powered directly into the blood stream, और ये ब्लड के अंदर बहना शुरू हो जाते हैं। Testosterone is the male hormone and the estrogen is the female hormone। ये इसमें जो मेल हार्मोन है वो कौन सा हो गया, ये ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन है ये, टेस्टोस्टेरोन। और ये क्या है हमारे पास, जो फीमेल का है वो है एस्ट्रोजन। सो द यूट्राइन वॉल इन द फीमेल prepare itself to receive the developing fertilized egg. In case there is no fertilization, the thickened lining of the uterine walls breaks down and goes out of the body along with blood. This is called as menstruation. Sex of the male child depends on the whether the zygote has XX or XY chromosomes. It is important to eat balanced food and maintain personal hygiene during the adolescence। तो ये सब चीजें याद रखनी है और बचा के रखना है अपने को। चलिए देखते हैं क्या है ये। फर्स्ट है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है हमारे पास देखना है। द फर्स्ट इज adolescent should be careful about what they eat because। तो इसका जो है बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बैलेंस डाइट को लें। सेकेंड है हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट्स व्हेन। कब स्टार्ट होती है, सो यू कैन से द सेकेंड। फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। ये आपकी रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो जाती है जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होते हैं। चलिए इसमें देखते हैं थर्ड को। द राइट मील फॉर एडोलेसेंट्स कंसिस्ट ऑफ। तो सो दैट इज द बी पार्ट, चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आंसर इज करेक्ट आंसर। नाउ फोर्थ वन, फॉलोइंग इज मेल हार्मोन। कौन सा है मेल हार्मोन, आपको पता होना चाहिए। दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। ये है आपका टेस्टोस्टेरोन करके है, तो इसको याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं इसमें मेन क्या है, ये एस्ट्रोजन क्या है, ये फीमेल का होता है। तो चलिए देखते हैं ऑर्गन्स के बारे में भी जान लेते हैं मेल एंड फीमेल्स को। तो सबसे पहले ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें आपका ये मेल का दिखाया हुआ है। तो मेल में क्या होता है, ये टेस्टिस होता है जहां पर ये स्पर्म फॉर्म होते हैं। यहां से होता हुआ आगे ये पेनिस है जो दिखाई दे रहा है ये।
ये पूरा ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है ये पेनिस है। इसके बाद जो है स्पर्म डक्ट होते हैं यहाँ पे, जो इसके थ्रू होकर के जाते हैं यहाँ से, और इस पेनिस के थ्रू आउटसाइड होते हैं। और स्पर्म का जो है ये दिखाया हुआ ये हेड पार्ट है आपका, जो ऊपर दिखाई दे रहा है राउंड शेप का, कुछ मिडिल पार्ट कुछ ऐसा बना हुआ होता है, और टेल वाला पार्ट ऐसा होता है ये। सो इट इज लुकिंग लाइक दिस टाइप। सो टोटली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पे गिवन है। नाउ कम टू द फीमेल ऑर्गन्स पे। फीमेल पे देखते हैं ये बीच में क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है इसमें एग के अंदर जो पाया जाता है, सो इसको हम ओवम बोलते हैं। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखिए क्या क्या है, ये यूट्रस होता है इस जगह जो दिखाई दे रहा है आपको, एंड दिस वन इज द ओवरी, यहाँ पर एग्स रहते हैं, एग्स फॉर्म होते हैं। ये ओविडक्ट है, यहाँ पे ओविडक्ट के थ्रू जो है यहाँ से थ्रू स्पर्म फ्यूजन यहीं से शुरू होता है, और यहाँ आकर के यहाँ एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइज हो जाते हैं। How can they fertilize? It is given here through human fertilization और जाइगोट्स कैसे फॉर्म होते हैं ये आपको दिखाया हुआ है। ये स्पर्म्स आर जो है एंटरिंग इनटू द एग, ये स्पर्म्स हैं विच आर एंटरिंग इनटू द एग्स। ये ओवम है, ओवम में एंटर कर जाते हैं स्पर्म, इसके बाद जो है ये फ्यूजिंग हो जाते हैं, न्यूक्लियाई इनका दोनों का फ्यूज हो जाता है, इसका न्यूक्लियाई और इसका न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज होते हैं और एक जाइगोट फॉर्म करते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं। चलिए देखते हैं कब जो है मेल और कब फीमेल बनता है। तो ये आपका है मेल पार्ट, मेल पार्ट के पास क्या होता है, ये मेल लिख दे रहा हूं और ये फीमेल लिख दे रहा हूं। मेल के पास जो होते हैं वो एक्स एंड वाई बोथ होते हैं, ये एक्स और वाई दोनों होते हैं। यहाँ देखो दिखा रखा है, ये एक्स दिखाया है और ये वाई दिखाया है, ये स्पर्म होते हैं। इसके बाद ये जो ओवम में होता है एग जो होते हैं, एग में एक्स फीमेल के पास ओनली एक्स और एक्स ही होता है। When they meet this one एक्स एंड एक्स मीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, गर्ल्स फॉर्म होती है। So you can write the girl here. Or if the x, this one x and this one x, so it is also girls form. And secondly, y and x, female का x यूज करते हैं तो xy बन गया यहाँ पे, so it is the boy. और यहाँ पर देखिए अगर ये फॉर्म होता है तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, x और y हो गया, तो एक्स वाई में भी बॉयज फॉर्म होगा। ध्यान रखना यहाँ पे एक्स एक्स है, यहाँ पर एक्स और वाई है और यहाँ पर भी एक्स और वाई है। तो ये जो है गर्ल्स गर्ल्स और बॉयज बॉयज के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। देखो यहाँ पे यहाँ एक्स एक्स है तो गर्ल्स है यहाँ, और यहाँ पर भी एक्स एक्स है तो ये गर्ल्स है, और एक्स और वाई है तो बॉयज है यहाँ पे, और यहाँ पर भी एक्स एंड वाई है तो ये बॉयज है आपका। तो ध्यान रखना है गर्ल्स गर्ल्स और बॉयज बॉयज हाउ कैन दे फॉर्म, तो मेल एंड फीमेल। ध्यान रखना है मेल के पास ओनली क्या होता है, मेल के पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल हैज ओनली वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम दैट इज द एक्स। नाउ व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, सो यू कैन राइट द आंसर। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडोलेसेंस आर इंक्रीज इन हाइट, change in voice, increase in activity of sweet and sebaceous glands, oil glands, and development of reproductive organs. So second question, what is the cause of acne and pimples etc. on the face of young one? So in adolescence, secretion of sweat and oil glands increases, so due to more reactivity of these glands, acne and the pimples etc. develop on the face of young one. Why do adolescents feel themselves insecure? So in adolescence, learning capacity of the brain is maximum. Although adolescent tries to change himself on the basis of physical and mental changes, still he feels insecure. What is the main difference between viviparous and the oviparous animals?
So difference between the viviparous and oviparous animals you can see here. So number one is the first one is the viviparous, and then one is the second is the oviparous. So animals which directly give birth to young one are known as viviparous animals. Example है human and cat. And here is the oviparous, that is the animals which lay eggs are known as oviparous. Example है hen and pigeon. यानी जो अंडे देते हैं उनको ओविपोरस बोलते हैं, और जो बच्चों को जन्म देते हैं वो विविपोरस होते हैं. Now come to the next question. What is fertilization? Explain. So fusion of sperm and ovum is known as fertilization. When sperm comes in contact with ovum, then out of them one sperm fuse with ovum. Next question है, which hormones are responsible for the change in adolescence? Hormones responsible for the change in adolescence in male is testosterone and hormone, and in girls is estrogen hormone. What is the duration of reproductive periods in females? So in females, during the reproductive periods is from 10 to 12 years up to 45 to 50 years of age. What do you understand by secondary sexual characters? Right. In adolescence, development of breast and of mucus and breed start appearing. These characters help in distinguish between the girls and boys. These are known as secondary sexual characters. Which chromosomes are responsible for sex determination in human? So in human, chromosomes responsible for sex determination are X and Y chromosomes. Next question, why is diet plan necessary for teenagers? So teenager is a stage of fast growing and development. Thus diet plan is necessary for adolescents. Why is personal hygienic necessary for teenagers? So teenagers should take bath daily because reactivity of sweat glands leads to release of bad odor from the body. Thus, regular cleaning of all body parts is necessary. If cleanliness is not maintained, there is a danger of catching bacteria infection. Girls should be more particular in maintaining illness at the time of menstruation. Thus, personal hygiene is very necessary for teenagers. Identify true false of the following statement and write them correctly. So first one is mother of a child is responsible for its sex. Second है in adolescence there is an increasing in height. Third है girls should not be kitchen work at the time of menstruation. Fourth है children are known as teenagers. Fifth है presence of XY chromosomes in female will develop in male child. Sixth है at menstruation body of girls becomes impure. So you can see here first one is false. So correct answer is father of a child is responsible for its sex. So second true है आपका, third भी true है, fourth है false है. Correct क्या है इसमें? Adolescents are known as teenagers. Fifth भी true है और sixth भी true है. So you can write in your copy. Now sex determination of unborn child. So fertilized egg or zygote has the information of sex determination of the developing child. This information is stored in the eggs is thread-like structure called chromosomes.
The table and graph below shows the data of the likely height of boys and girls as they grow in age. The same graph is showing height and age for both boys and girls in your copy. What conclusion can be drawn from the graph? तो ये ग्राफ आपको दिखाया हुआ है दोनों बॉयज और गर्ल्स का, दोनों का ग्राफ शो कर रखा है। तो बॉयज में दिखा रखा है ये एज है 0 में 51 है, तो गर्ल्स की भी 51 है हाइट सेंटीमीटर में। फोर्थ एज में क्या होगा, फोर्थ ईयर्स में 94 होगी बॉयज की हाइट, लेकिन गर्ल्स की 90 रहेगी। 8 ईयर्स में क्या हो रहा, 112 हो जा रहा, बॉयज की हाइट बढ़ गई और ये 108 ही रह गई। और 12 ईयर्स में ये 127 हो गए, ये 131 हो गए। और 16 की एज में 148 सेंटीमीटर, ये भी 148 सेंटीमीटर, और 20 ईयर्स की एज में 171 है और ये 163 रह गया। तो इस तरह से बॉयज और इस केस में ग्राफ शो कर रखा है। ये इसमें जो ब्लू कलर का है वो तो बॉयज का है, जो रेड कलर में है वो गर्ल्स का ग्राफ शो कर रखा है। यहाँ पर आपको एज दिखा रखी है, ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं, और इधर जो एज दिखा रखा है इन्होंने 0 20 40 60 80 करके दिखा रखा है। ये इसको नंबर ऑफ बॉयज के लिए दे रखा है। तो चलिए इसमें क्या कंक्लूजन निकलता है। सो यू कैन सी हियर, सो कंक्लूजन obtained by the table and graph is that height of the boys and girls increased uniformly from 0 to 4 years. In between 8 years to 12 years, height of girls increases more and height of boys increases comparatively less than the girls. Up to 16 year height of both becomes nearly same. Then after height of boys increases more and that of the girls increases less. So it is the end of your chapter and also the end of your book. ये नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा मिल सके, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि नोटिफिकेशन मेरा आपको वीडियो डालते ही मिल जाए। आज इस बुक का दी एंड हो रहा है, तो आई होप कि आप लोगों को बुक अच्छी लगी होगी। सोल्यूशन मैंने जितनी कोशिश की है कि बनाकर देने की, शायद अच्छी तरह से बन गया होगा, आपको सबको पसंद आया होगा। अब मैं अगले फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ देखते रहिए मेरा चैनल